Well, welcome back. We've got a couple of things left to discuss tonight about today's games. Australia, remember, very, very dominant in their match against Bangladesh. A very fine bowling performance, a short time at the crease just to knock off the runs in good time. But the key to their day was obviously their bowling, because they stuck Bangladesh in, put the pressure on them right from the start. These are the figures for Australia. Very impressive, really, all round. The two opening pacemen, Stark and Hazlewood, did the early damage and set the tone for the day. Adam Zampa had some very good pickings later on. I mean, he bowled his 4 overs, 14 dot balls within that, 19 runs conceded, but 5 wickets. Could have had a hat-trick. There was a sharp chance dropped behind by Matthew Way. Could have had a hat-trick, but nonetheless, those are very special figures. And for Australia, all the damage done with the ball, which rather sort of set up the win within about an hour or so. Yeah, the first match that ended in 2 hours' time, I think, of this World Cup. So it was quite. We would have really liked if it was the second match, but it was. Don't give away the secrets. It was the afternoon game, and the man who set it up, as Umar Gol mentioned earlier, also Hazlewood, Josh Hazlewood, who has been bowling really well in this tournament, bowled another very good spell. Umar, बहुत ज़बरदस्त ये 2 overs. 10 डॉट बॉल्स 2 ओवर्स में कराना अप फ्रंट। जी बिल्कुल, इसकी क्वालिटी यही है कि एक्यूरेसी और अच्छे लाइन और लेंथ के साथ विद गुड पेस, टॉल गाय और लाइक अच्छा पेस भी है। मेनली रेड बॉल में ये खेलता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन इसकी जिस तरह की एक्यूरेसी है लाइन और लेंथ पे और जितना कंसिस्टेंट है, तो इसको वाइड बॉल में लेके आया। और अब ये वाइड बॉल में परमानेंट वो है, लाइक उनका पेस अटैक है, तो बहुत रिलाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पे और उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। तो आई थिंक इसी वजह से ये कंसिस्टेंट भी है अपनी लाइन और लेंथ की वजह से, और इसको जो ना विकेटें भी मिलती है। और यही 2 बॉलर है, जिस तरह स्टार्क है और ये हैजलवुड, टीम के लिए एक टोन सेट करता है। कप्तान ने टॉस जीत के पेसर के लिए किया कि हम पहले बॉल कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है कि पेसर ने अच्छे उसको रिप्लाई किया और अच्छे उसको रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल। अजहर भाई, 2 ओवर्स में सिर्फ 2 स्कोरिंग बॉल्स, 2 चौके लगे और 8 रन आए, और बाकी 10 डॉट बॉल्स, 2 विकेट्स। क्वालिटी दिखाते हैं, और फिर उसको उसके बाद लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाकी बॉलर्स से बॉल करा दी। बट ओवरऑल इस टूर्नामेंट में हेजलवुड की परफॉर्मेंस को क्या कहें? अगर ओवरऑल देखें हेजलवुड की, एक तो लाइन जो है ना, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप जितने भी देखें, वो 8 मीटर की लेंथ पे उन्होंने बॉल किया है, हार्ड लेंथ पे बॉल किया है। और अगर आप जितने भी अभी जो डॉट बॉल हैं, आप सारे बॉल देखें कि विकेट के बीच में बॉल थे, कोई हाथ खुलने नहीं दिया। आपकी पेस अगर नहीं भी है, उनकी पेस मिचेल स्टार्क जैसी पेस नहीं है या रबादा जैसी पेस नहीं है, लेकिन अपनी लिमिटेड का उनको पता है क्या उनकी लिमिट है, कहाँ पे उन्होंने बॉल करना है, और उसमें एबिलिटी है कि वो बॉल को दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो ये एक क्वालिटी है एक बॉलर की कि बीच में से अगर बॉल बाहर निकलता है तो उसमें चांस भी है आउट होने का। और देखा हमने प्ले डाउन हुआ कि उसने बॉल रोका है, लेकिन वो प्ले डाउन हुआ तो विकेट में गया। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही, मतलब अगर आप इसको देखें, एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज भी हमने देखा जो बांग्लादेश के साथ हुआ, पेस के सामने वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए, और स्पिन के सामने भी हमने पिछले मैच में जो देखा, साउथ अफ्रीका की पेस थी, तो ना वो पेस को खेल सके हैं। नॉर्मली ये होता है कि स्पिन को वो अच्छा खेलते हैं, कि ये एक चीज़ थी कि स्पिन अपने बांग्लादेश की टीम है, स्पिन अच्छा खेलेगी, लेकिन हमें आज भी और पिछले मैच में भी देखा कि फास्ट बॉलर ने आउट किया और फिर साथ में स्पिनर्स ने आउट किया। तो बांग्लादेश तो टोटली एक्सपोज हुआ है। तो क्रेडिट जाता है कि जैसे मिचेल स्टार्क है, वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है, नए बॉल से जो है वो रन थोड़े से ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में आपकी अपोजिशन को एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उनकी विकेट्स लें। बिल्कुल, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। राशिद भाई, 2 सवाल आपसे। एक तो आपने उस दिन हसन अली के बारे में भी बात की कि उनको हारिस रऊफ और शाहीन की तरह तेज़ बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, अपनी उस पर स्टिक रहना चाहिए। यही बात अब अजहर भाई जॉश हेजलवुड के लिए कर रहे हैं कि वो बहुत पेस करने नहीं जा रहे, वो अपनी लिमिटेशंस को यूज़ करने जा रहे हैं। तो एक तो इसके ऊपर प्लीज़ ज़रूर बात कीजिए। और जो मसला आ रहा है बांग्लादेश के बैटर्स को पेस और स्पिन पे, टेक्निक वाइज आप कहाँ रेट करते हैं उनके बैटर्स? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हेजलवुड की लेंथ है, ये हमारे जो कोचेज हैं, अजहर है या आकिब, इस टाइप के बॉलर्स को रखना चाहते हैं, क्योंकि जिसको आप T20 में सिखाने जा रहे हैं हार्ड लेंथ, वो ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल वेपन है वो हार्ड लेंथ। लेकिन
ये एशियन बैटर्स के लिए या बल्लेबाजों के लिए ये अच्छी चीज़ है। ये लाइन में आने की कोशिश करते हैं, शफल करते हैं। लेकिन अगर हम हाईलाइट देखेंगे बटलर की अगेंस्ट हैदरवुड, तो उसने अपनी लेग क्लियर किए और उसको मारा है, हार्ड लेंथ पे ही मारा है। तो दो अलग खेलने वाले प्लेयर है। माइंडसेट एक इंग्लिश प्लेयर का डिफरेंट है और बांग्लादेश या पाकिस्तानी प्लेयर का डिफरेंट है। वो अपने आप को आगे लाके लाइन में खेलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हम बोल देंगे पाकिस्तान के खिलाफ या इनके खिलाफ कर दिया। मज़ा जब आएगा जब आपका मैच होगा, सेमीफाइनल में आते हैं, किसी बड़ी टीम से होता है और वहाँ पे आप इस तरह से 2 ओवर निकाल दें। इनके सब बॉलर ने 9 ओवर के 35 डॉट बॉल थी। तो सिर्फ हैजलवुड नहीं, बाकी बॉलर्स ने भी ये कमिंग्स हो जाए या मिचेल स्टार्क हो जाए, इन्होंने देखें हमारे जो प्लेयर हैं थोड़ा पेसर होते हैं, नाम अगर डरते हैं थोड़ा सा। डरने का मतलब है कि आउट होने से भी डरते हैं और लगने से भी डरते हैं। ये इशू तो है, लेकिन दोनों को कंपेयर हमें करना चाहिए। कल अगर कोई शो हो तो उसमें बटलर की बैटिंग दिखाएं, इनकी बॉलिंग दिखाएं, वो हमें मालूम चल जाएगा यार अभी इनमें भी काम है। कोई भी कंप्लीट नहीं होता। किसी दिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं और किसी दिन ऐसा होता है कि वो तितर बितर हो जाते हैं। बाकी बांग्लादेश की बैटिंग मेरे ख्याल से जो बैटिंग कर ली है, इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बैटिंग कर ली है उस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन ब्रिंग द डिस्कशन हेयर। ऑफ कोर्स द मैच वाज शॉट एंड द बॉलिंग you have seen about Australia. You want to discuss the bowling or the batting? It's all up to you guys. Well, I'll tell you what. I mean, the bowling did the job, didn't it? I mean, that rather sorted the game out in, what was it, 15 overs. So the only thing for Australia after that was whether they could get their net run rate up, to sort of just have something in hand for their final game, and for that slim, well, not slim chance, that real chance of qualifying for the semi-final. So, for instance, if you just look quickly at the batting card, it didn't take long. That's an understatement. 6.2 overs to get 78 for 2. Finch was outstanding, 40 from 20. Warner, not quite at his best yet. He's only had one decent innings recently, but 18 from 14. Marsh, a couple of big blows, 16 from 5, and that was that. Job done. And I think from Australia's point of view, they're very happy with all that. Their net run rate thing went up nicely, so they're now in a position to challenge if everything goes right elsewhere. Especially when they put Bangladesh into bat, I guess they would have accomplished what they wanted to, achieve the runs in quick time. One of the things, maybe an advice I'd really like to give to the Bangladesh team, their whole emblem, it's all about the tiger. They got to start having some bite. Start biting a bit more, you know. For you to have that emblem as carrying the tiger, we want to see a little bit more. The tiger, there's some toothless tigers. They need to see a dentist. Seriously, I mean, look, in this whole tournament, Bangladesh must have felt really bad. They got millions of fans. They all love cricket, and it's eye-opener for them, for the cricket board, the system. They have to change it. Whatever the routines they were going, have to move on, bring some new ideas. And the next World Cup, we wanted to see some good cricket from Bangladesh. Okay. Quick look at the Australian batting, and then just a couple of highlights from this very, very swift chase. It was Aaron Finch who really just blasted it. His one mission was to score these runs as swiftly as possible. He gets in good positions. He gets his feet out of the way. He gets the bat through. He's a powerful hitter. Very strong man. Good time to the cricket ball as well. That just made it over the head and over the boundary. But it was all about the pace. It's all the pace of the scoring. That was it. Even Mustafa Azhar, who tore back into the side, could do nothing. He was expensive from his 2 overs. They went for 32. Taskin Ahmed went for 36 from 3 overs and a couple of balls. Shoriful, 1 over, 1 for 9. It was carnage. There's that word to use when the ball disappears to all parts of the ground in a hurry. Carnage, absolute carnage. And as I say, just the job was done in double quick time. Very successful for Australia on both counts. Points in the bag, points in the table, net run rate up there.
Thank you very much indeed. So that's them still with a chance. Bangladesh, of course, have finished their journey now. So we just sort of go, thank you for coming. Yeah, and we can just have a look at their journey as well. शुरू उनका एक हार से हुआ था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, जो उस वक्त अपसेट ही कहा जा रहा था, 6 रन से हुआ, और उसके बाद 3 मैचेस में कमबैक किया श्रीलंका के अगेंस्ट। अच्छा, और उसके बाद 4 मैचेस फिर उन्होंने बार बार हार दिए, तो वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जीत नहीं सके। ये श्रीलंका जीत गया था, श्रीलंका भी सारे मैच हाँ। हारे हैं। इसके बाद ये इधर शायद हमारे ग्राफ में कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे श्रीलंका से भी ये मैच हारे हैं, बट ओवरऑल जब मेन राउंड में आए वर्ल्ड कप के तो कोई भी जीत हासिल ना कर सके, और यही स्टोरी रही है बांग्लादेश की इस पूरे टूर्नामेंट की। ये जीते थे 4-1 जीत के आए थे अभी ऑस्ट्रेलिया से। उसमें ऑस्ट्रेलिया की चीज होंगी, देखें इनकी प्रिपरेशन, इनकी अप्रोच, इनकी सोच देखें। क्यों आके आप कुछ बांग्लादेश ढाका के ग्राउंड भी देखा हुआ नेशनल एक्सक्यूज मी, शारजा टाइप होता है, रियली विकेट होती है, स्पिनर्स ऐसी ही होती है। तो दे जस्ट वांटेड टू win at home, host people on their paradise. Their conditions, feel right. good. We know factor. their conditions are different. So whatever they did, actually there was an interview with the captain afterwards, wasn't there, where he said they needed their victories at home to try and give them confidence for this tournament, and they played Australia, beat them well on Bangladesh pitches, but something so completely different to what they've seen here. So although they might have gained a bit of confidence before they came here, sadly I think they've rather lost it. That confidence has been dented by their experiences. But Aaqib has got so many ideas about how they can improve. The guys here I know have got ideas as to what they should be doing as well. And they will have to learn the lessons. It's as simple as that. So that basically sums up the 2 games we've had today. Sana, what's coming up next? तो नेक्स्ट जो मैचेस हैं कल के, उसमें सबसे पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड और नामीबिया का मैच है, जो शारजा में खेला जाएगा 2 बजे लोकल टाइम और 3 बजे पाकिस्तान टाइम। और इस मैच का ऑब्वियसली न्यूजीलैंड को भी पॉइंट्स की ज़रूरत है, इंडिया को भी पॉइंट्स की ज़रूरत है। दूसरा मैच इंडिया और स्कॉटलैंड का है, जो दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा 6 बजे लोकल टाइम और 7 बजे पाकिस्तान टाइम। और दोनों ये टीम्स जो हैं वे इस वक्त रेस में हैं, इंडिया और जो न्यूजीलैंड की टीम है, स्कॉटलैंड और नामीबिया ऑब्वियसली दोनों वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, तो ये पॉइंट्स इन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अब देखते हैं इंशाल्लाह कैसे जाते हैं ये मैचेस। So these are the 2 matches for tomorrow. Do you get the feeling that tomorrow's matches are about things like net run rate? It will be, of course. They both will be fighting for the They points are. and the You net. might say one match finishing in lesser than 7 overs. As today. Well, okay. Well, we of course will be back tomorrow for that. But for tonight, thank you very much again to Thank the you. panel for all their thoughts. We of course will be back in the morning, and I just cannot tell you how much I am looking forward to tomorrow's matches. In fact, I cannot tell you how much I'm looking forward to tomorrow's matches. Thank you for watching. This has been Game on Hay. Game on है. Game on है।